खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7 आई न्यूज को सब्सक्राइब करिए। 27 फरवरी को पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता ने दावा किया था कि उनके प्लेन ने 2 भारतीय पायलट को हिरासत में लिया है, लेकिन कुछ ही घंटे में पाकिस्तानी सेना ने साफ कर दिया कि उनके कब्जे में एक ही भारतीय पायलट है। ये भारतीय पायलट थे विंग कमांडर अभिनंदन। विंग कमांडर अभिनंदन की वतन वापसी के बाद सैन्य विशेषज्ञ और दुनिया भर में फैले भारतीय और पाकिस्तानी अब ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस दूसरे पायलट को कब्जे में लेने की बात पाकिस्तानी सेना कर रही थी, आखिर वो कौन थे। दरअसल पाकिस्तानी सेना जिस दूसरे पायलट को गिरफ्तार करने का दावा कर रही थी वो पाकिस्तानी पायलट ही थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे और पाकिस्तान ने अपने एक पायलट की मौत की खबर छुपा ली ताकि उसे शर्मिंदगी न झेलनी पड़े। Was recovered east of Rajouri within the Indian territory. Therefore, the fact remains that one F-16 of PAF was shot down by IF MiG-21 Bison. IF remains ever vigilant, ready and committed to take on any eventuality. Air Vice Marshal R.G.K. Kapoor from Indian Air Force. I'll be requesting the service representatives to present a statement, following which we will also be taking few questions, and in the end I will request the Air Force to present you all with some evidence. May I now request AVM Kapoor to kindly give his statement. Good evening, ladies and gentlemen. On 27th February 2019, at around 1000 hours, Indian Air Force radars detected a large package of Pakistan Air Force aircraft heading towards the Indian territory, towards general area Jangar. They breached the Indian airspace west of Rajouri in the Sundarbani area. The ingressing aircraft were observed to be at various levels. IF fighters, including MiG-21 Bison, Sukhoi 30 MKI, and Mirage 2000 were tasked to intercept the intruding Pakistan Air Force aircraft. The Pakistan Air Force aircraft attempting to target our military installations were intercepted by the IAF fighter aircraft, which foiled their attack. Although PAF bombs have fallen in the Indian Army formation compounds, however, they were unable to cause any damage to our military installations. In the aerial combat that ensued, one F-16 of Pakistan Air Force was shot down by an IAF MiG-21 Bison aircraft. The F-16 crashed and fell across the line of control in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. The IAF lost one MiG-21 in the aerial engagement, and though the pilot ejected safely, his parachute drifted into the Pakistan-occupied J&K, where he was taken into custody by the Pakistan Army. There have been many factually incorrect statements that have been made by Pakistan. 27 फरवरी को सैन्य कार्यवाही के वक्त मारे गए पायलट पाकिस्तानी एयरफोर्स के विंग कमांडर शहजाद उद्दीन थे। शहजाद उद्दीन 19वीं स्क्वाड्रन से जुड़े थे और घटना के वक्त वह F-16 उड़ा रहे थे। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दुखदायी पहलू ये है कि आकाश में जब भारत और पाकिस्तान के विमान टकरा रहे थे, इस दौरान पाकिस्तानी पायलट POK की सीमा में ही उतरने में कामयाब रहे। हालांकि उन्हें कुछ चोटें लगी, लेकिन वे जिंदा थे। लेकिन तभी उन्हें कुछ पाकिस्तानियों ने घेर लिया और उन्हें बेरहमी से पीटने लगे। दरअसल पाकिस्तानियों ने उन्हें भारतीय पायलट समझकर पीटा था। जब तक विंग कमांडर शहजाद ने अपनी पहचान साबित की, उन्हें काफी मारा पीटा जा चुका था। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। Jai Hind and good evening to everyone. In response to the counter-terrorist strike by the Indian Air Force, Pakistan Army first resorted to unprovoked ceasefire violations, as you are aware, in Sundarbani, Bimbar Gali, Naushera,
and Krishna Ghati sectors on 26th February, with effect from 5 o'clock in the evening and again during the night. This was responded to by the Indian Army in a befitting and appropriate manner. As my Air Force counterpart has elaborated, on 27th February 19, the Pakistan Air Force attempted to target our military establishments in J&K. Specifically, they targeted a brigade headquarter, a battalion headquarter, our defenses, and a logistic installation. However, given the high level of preparedness along the line of control and the immediate and punitive response given by our own forces, the Pakistan Air Force's designs were foiled.